Hello, my dear students. Welcome back MS-CIT era सेशन नंबर 36 में। तो चलिए देखते हैं सेशन नंबर 36 नॉलेज चेक टेस्ट 1 के क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है you you can adjust the size of the slide according to your requirements। इसका आंसर है ट्रू फॉल्स में है तो इसका आंसर है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी द फॉर्मेटिंग टूल बार ड्यूरिंग स्लाइड शो। ये भी ट्रू और फॉल्स में ही क्वेश्चन आंसर्स है तो इसका आंसर है फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन यू स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। इसका आंसर है बी, प्रेस द F5 की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द प्रेजेंटर वीडियो ऑप्शन अलाउ यू टू डू। तो इसका आंसर है डी वाला, एक्सेस कंट्रोल्स एंड नोट्स व्हाइल प्रेजेंटिंग ऑन अनदर डिवाइस। सेशन नंबर 36 का नॉलेज चेक टेस्ट 2 अबाउट एआई टूल है, क्लिक अप एआई टूल के ऊपर क्वेश्चन आंसर्स है तो उसका क्वेश्चन फर्स्ट है, विच क्लिक अप फीचर इज बेस्ट demonstrated in this image। तो इसका आंसर है ये टास्क ऑटोमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज क्लिकअप इम्प्रूव टीम प्रोडक्टिविटी। तो इसका आंसर है ये कन्वर्ट्स मीटिंग इनटू ऑटोमेटिक रिपोर्ट्स। सेशन नंबर 36 नॉलेज चेक 3 अबाउट एमएस पावर पॉइंट्स डिजाइनर एआई टूल के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पावर पॉइंट डिजाइनर प्राइमरली हेल्प्स यू। तो उसका आंसर है बी, क्रिएट प्रेजेंटेशंस क्विकली। नेक्स्ट सेशन नंबर 36 नॉलेज चेक 4 अबाउट साइडर डॉट ए आई टूल के ऊपर क्वेश्चन है। सो उसका क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स साइडर डॉट ए आई यूनिक कंपेयर टू अदर ए आई टूल्स। सो उसका आंसर है, इट इंटीग्रेट्स मल्टीपल ए आई मॉडल्स फॉर डिवर्स टास्क। नेक्स्ट सेशन नंबर 36 सेल पाथ लर्निंग वाला टेस्ट अबाउट टॉपिक है स्लाइड शो टैब। सो उसका क्वेश्चन फर्स्ट है, सेव योर प्रेजेंटेशन विथ डैश एक्सटेंशन। सो प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन कोड क्या होता है, तो .pptx होता है और उसी नाम से फाइल सेव हो जाती है। नेक्स्ट एक ही क्वेश्चन था। सेशन नंबर 36 का भी सेशन कंप्लीशन टेस्ट। वैसे देखा जाए तो सेशन नंबर 36 बहुत स्मॉल है। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मनाली wants a disk from which data cannot be deleted or changed. She decides to use CD-ROMs to save the data. Is her decision correct? इसका आंसर है ये yes, because a CD-ROM stores data permanently and does not allow users to delete or modify the data. Next question, no, sorry. Next question. How does an optical disk drive read data from a disk and distinguish between binary 0 and 1? सिलेक्ट टू ऑप्शंस करना है, इसमें दो आंसर्स है तो इसका आंसर है ए वाला एंड डी वाला। ये वाला है पिट स्कैटर और डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट एंड आर रीड। डी वाला, lands reflect light and are read as one. Next question, which types of optical disc have enough storage capacity to store a 6 GB, 5 GB and gigabytes? सबसे बड़ा वाला ये बाइट होता है। Select any two options, इसका आंसर है सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a hospital uses hybrid storage by keeping current patients records on local servers and storing other patients' data in the cloud. What are the benefits of this hybrid storage system? Select two options है, इसका आंसर है A and D. Next question. Meghna loses her phone but can still access her data on another device. Which features of cloud storage make this possible? Select two answer है इसमें भी, इसका आंसर है B and C. Next question. Class 10 students from different regions are working on a group project without meeting in person. They decide to use Google Docs to create and share their ideas in one document. Why is cloud storage the best solution for this? इसका भी सिलेक्ट टू ऑप्शंस है तो इसका आंसर है ए वाला एंड सी वाला।
ठीक है, ए एंड सी ये दोनों आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ फर्म फिल्म storage important court case record on DVD are right ones. Disk instead of DVD RW rewritable होता है ये. Disk, what are the possible reasons for the disk choice? इसके भी दो आंसर चूज करना है, तो इसका आंसर है बी एंड डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, a Blu-ray disc and a DVD look similar in size, but Blu Ray disk can store much more data, about 50 GB. What is the main reason of for this? इसका आंसर है सी. Blu-rays uses a blue laser that allows more data to be stored. Next question. मतलब सी आंसर था. नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन save his project on Google Drive but forget to bring his pen drive. He wants to open the project on a school computer. What is necessary for him to access his file? इसका आंसर है डी, इंटरनेट एक्सेस टू ओपन फाइल्स फ्रॉम क्लाउड स्टोरेज. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, एन ऑफिस मैनेजर नीड्स टू बैक अप टेम्पररी फाइल्स every day. The files are replaced after 24 hours. So the storage device should be reusable um, and cost effective. Which type of optical disc is the best choice for this purpose? इसका आंसर है बी, डीवीडी आरडब्ल्यू रीराइटेबल. सो इस तरह से ये था सेशन नंबर 36. इसमें हमने नॉलेज चेक टेस्ट एंड अबाउट एआई टूल के ऊपर के नॉलेज चेक टेस्ट एंड सेल पाथ लर्निंग टेस्ट एंड सेशन कंप्लीशन टेस्ट हमने देखा. तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखकर अपने क्वेश्चन आंसर्स आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो ताकि आपके मार्क्स माइनस ना हो जाए. तो फिलहाल रुकते हैं इसी सेशन में, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए बाय बाय.